Hello friends, Shyamal Kapadia here. We're going to talk about the chapter called light, the phenomenon of reflection and refraction. पहले पार्ट जो चैप्टर में है ना वो रिफ्लेक्शन के बारे में है and the second part is about refraction, right? So we're going to attack reflection as of now. अगर मैं बोलूं कि रिफ्लेक्शन क्या है, 8th-9th में हम लोग ने पढ़ा है व्हाट इज रिफ्लेक्शन. बेसिक बच्चों की भाषा में अगर मैं बोलूं व्हाट एग्जैक्टली इज रिफ्लेक्शन, पहले तो एक स्मूथ सरफेस होना चाहिए. When the ray of light falls on that smooth surface, polished surface, yes, it bounces back in the same medium. That is very important. सेम मीडियम, मतलब अगर हवा से लाइट आ रहा है तो वापस रिफ्लेक्शन होने के बाद वो हवा में ही वापस जाना चाहिए. After the reflection through a smooth surface. So when a ray of light strikes the surface, it bends and enters into the same medium. After it strikes the smooth and a regular surface, and that phenomenon is called reflection of light. Reflection दो टाइप के हो सकते हैं. You can have reflection through a smooth surface or reflection through an irregular surface. So you can have a regular surface or an irregular surface. दो टाइप के रिफ्लेक्शन हो सकते हैं, राइट? रिफ्लेक्शन में और मैं क्या बोल सकता हूं कि यूजुअली डे टू डे लाइफ में रिफ्लेक्शन अकर्स हैपेंस थ्रू अ मिरर. मिरर कैसा दिखता है और मिरर में जो इमेज बनता है ना वो कैसा बनता है, लेट्स ऑब्जर्व. चेक. मिरर का जो स्टार्टिंग का सरफेस है ना, इट इज अ ग्लास सरफेस. इसके पीछे का सरफेस या दिस वन, इट इज एक्चुअली अ सिल्वर पॉलिशिंग से बना होता है. इट इज अ सिल्वर पॉलिश सरफेस. और उसके भी जो और एक सरफेस होता है एंड दैट इज नथिंग बट अ रफ सरफेस और एन ओपेक सरफेस. सो स्टूडेंट्स, आई वुड रादर टॉक अबाउट 3 सरफेसेस. पहला सबसे बाहर है ग्लास का सरफेस. सेकेंड सरफेस है हाईली पॉलिश्ड सिल्वर सरफेस, एजी मतलब सिल्वर. एंड एंड का ओपेक सरफेस रहता है, लेट्स से इट्स मेड अप ऑफ वुड. ओके. whenever a ray of light falls, whenever a ray of light is incident on the glass, वो है ना मिरर से कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं करता. सॉरी, वो अंदर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, जो पॉलिश, जो सिल्वर सरफेस है, उधर से रिफ्लेक्शन होता है स्टूडेंट्स. तो रिफ्लेक्शन कभी भी बाहर के, हम लोग को लगता है कि बाहर के मिरर से रिफ्लेक्शन होता है, पर नहीं, सॉरी, रिफ्लेक्शन वो सिल्वर सरफेस से होता है. सो ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन होने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, यस, which we call it as the laws of reflection. So let's study the first law while looking at the diagram. पहले तो ये जो एंगल बनता है between the incident ray, of course we call this as incident ray, and the normal, इसको normal बोला जाता है. normal मतलब perpendicular to the surface. Yes, so the angle between the normal and the incident ray is called I, angle of incidence. And the angle between the reflected ray and the normal, this one, we call it as angle of reflection R, right? So if someone asks me what is an incident ray, an incident ray is a ray of light, a beam of light which strikes, is incident on the reflecting surface. A reflected ray is a beam of light which after reflection through a smooth surface goes back, bounces back in the same medium, right? And if I'm talking about the laws of reflection, law number 1, angle of incidence is equal to angle of reflection. Law number 2, the incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence are very important. At this point where they all meet up, at the point of incidence, lie in the same plane. इसका मतलब क्या दोस्तों? सेम प्लेन का मतलब क्या पता है? इसको हम लोग एक प्लेन बोलते हैं. ये एक प्लेन है, दीवार.
साइड में जो होता है ना वो दूसरा प्लेन है, और अपना जो जमीन है द ग्राउंड इज द थर्ड प्लेन ना। मुझे बताओ कि अगर इंसिडेंट रे ये प्लेन में है ना, तो ऑब्वियसली रिफ्लेक्टेड रे भी यही प्लेन में होगा। स्टूपिड होगा ना कोई जो बोलेगा सर वो दीवार में इंसिडेंट रे, ये दीवार में रिफ्लेक्टेड रे, ऐसे थोड़ी होता है। तो ऑल ऑफ देम शुड लाई इन द सेम प्लेन, दैट्स द मीनिंग, राइट? सो देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सो वी कॉल दिस एज लॉज. Okay, so this was a briefing about reflection. With this concept ना हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं कि कैसा इमेज बनता है जब मैं मिरर के सामने खड़ा रहता हूं, कैसा इमेज बनता है. Come on, I look at myself in the mirror. Yeah, I'm looking at myself in the mirror. First, can I say मेरा जो इमेज बनता है, इमेज जो मैं अपने आप को देखता हूं, is erect, upright. Upright मतलब straight. उल्टा इन्वर्टेड नहीं बनता है ना, इट इज इरेक्ट अपराइट बनता है. सेकंड, सेम साइज का बनता है, ऑब्वियसली मैग्निफाइड या डिमिनिश्ड सेम साइज. थर्ड, लैटरली इन्वर्टेड. Hey, what do you mean by lateral inversion? If I am writing from my right hand, अगर मैं राइट वाले हाथ से लिख रहा हूं ना, मिरर में मुझे दिखेगा कि मैं लेफ्ट हाथ से दिख रहा हूं. दैट इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन. कम ऑन यार, ये जो आर शब्द है ना, अगर तुम लोग मिरर में देखोगे तो ऑब्वियसली कैन आई से उल्टा आर दिखाई देगा. दैट्स कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन, 180 डिग्री रोटेशन. एंड फोर्थ, what else can you say? You said it's same size, laterally inverted, erect. और ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, बट एक पॉइंट है that the distance between the object and the mirror is same as distance between image and the mirror. मतलब अगर ये मिरर है, I am an object. If I am standing at a distance of 5 centimeter away from the mirror, तो मेरा जो इमेज है वो मिरर के पीछे बनेगा at the same distance. मतलब let's take an example. Let's say this is a mirror. I am an object. Look, I'm standing out here. Yeah. O for object. Let's say this distance is 5 centimeter. तो obviously मेरा जो image बनेगा, जो मिरर के पीछे बनेगा, yes students, that will also be at a distance of 5 centimeter. So the distance between the object and the image in my example is going to be 10 centimeter. Double. Right, lovely. This was one of the concepts which we have studied. इसके बाद एक एक्टिविटी आता है 10.1. क्या बोलता है एक्टिविटी? मुझे बोला कि एक स्पून लो, एक बड़ा सा लार्ज सिल्वर स्पून लो और अपने आप को देखो. राइट? क्या दिखेगा? ऑब्वियसली मुझे मेरा इमेज दिखेगा, थोड़ा फेस दिखेगा, मेरी आंख दिखेगी. आई विल गेट अ स्मॉल एंड अ लार्ज साइज डिपेंडिंग ऑन कि स्पून को मैंने कौन से डायरेक्शन में, कौन से एंगल पे, कितने डिस्टेंस पे रखा. ऑल्सो स्पून के दो सरफेसेस है गाइस. आई थिंक one surface is this way. If I keep the spoon in this direction, तो एक bulging inward surface होगा स्पून का और एक bulging outward surface होगा स्पून का. So I can say the inward bulging surface, yes, we call it as a concave surface, and an outward bulging surface we call it as a convex surface. We are going to study in depth that through, इसी से तो concept आया है, through concave mirrors and convex mirrors का जो concept है has actually been emerged from this small simple thought process. तो I would rather say that we have two types of mirrors. Plane mirror तो है ही, हम लोग जब छोटे थे ना तो we studied about the plane mirror. Right now, we are not going to study about the plane mirror. We're going to talk about concave mirrors and convex mirrors. तो सुनो ना, if I'm talking about concave, convex,
the best way I can explain this is by diagrams. बट मैं कुछ पॉइंट्स तो लिखने दो ना यार, ऐसे मत करो मेरे साथ. हाँ, थोड़े पॉइंट्स लिखने दो, बट इसका जो डेप्थ है या मैं बताऊंगा तुम लोग को. ठहरो ना यार, यू विल एंजॉय दिस चैप्टर विथ मी. लुक एट द फर्स्ट वन. कॉन्केव जो मिरर है ना, उसका पहले तो डायग्राम बनाते. इट लुक समथिंग लाइक दिस, वेयर ये जो पीछू का सरफेस है, द आउटवर्ड बल्जिंग सरफेस इज ओपेक, और ये अंदर का सरफेस है ना, इनवर्ड सरफेस इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. सो आई कैन से दैट इनवर्ड सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, और इसमें डायग्रामेटिकली इट गोज दिस वे. इनवर्ड सरफेस इज एन ओपेक सरफेस, द आउटवर्ड सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग. शॉर्ट में लिख रहा हूं, आउटवर्ड सरफेस इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ये पहला पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट पे जाते, दूसरे पॉइंट पे कॉनकेव मिरर को हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर. यप, वी कॉल इट एज अ कॉन्वर्जिंग मिरर. And convex mirror is said to be a diverging mirror. Third, concave mirror converge क्यों यार, क्यों? Because जहां rays of light आते हैं ना, वो एक ही पॉइंट पे मीट होते हैं. That means all the rays of light after bending, after reflection, they meet at the same point. उसलिए तो उसको converging नाम दिया है. So I can say the rays of light, they intersect at a single point. और इसमें can we say that the rays of light they don't intersect? नहीं, diverging mirror है. वो लोग मिलते नहीं है, वो लोग दूर जाते हैं, दूरियां बढ़ती है. हाँ, मन मुटाव होता है, तनाव पैदा होता है. अरे सिंपल यार, they go away from each other. But if traced backward, they happen to meet at a point. They don't meet. Imagination. मिलते नहीं है, मिलन नहीं होता है. बट जब मैं उसको पीछे ट्रेस करूंगा, then they happen to meet. So I will say, rays don't meet. But when traced backwards, they appear to meet. And that's convex mirror. तो अभी तक मैं 3 पॉइंट्स लिखा हूं, और भी बहुत सारे पॉइंट्स है. वी आर गोना टॉक अबाउट रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, मैग्निफाइड, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड. वो सारी चीजें ना हम लोग रे डायग्राम्स करेंगे, उसके बाद ही मैं इसमें एड ऑन करूंगा. प्लीज तुम लोग जब ये रिवाइज कर रहे हो ना, 3 पॉइंट्स के नीचे शायद और भी 3 पॉइंट्स आएंगे. हाँ, बट एज ऑफ नाउ 3 पॉइंट्स आर सफिशिएंट टू स्टार्ट विथ दिस, राइट? सो नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट मिरर्स में कुछ डेफिनेशंस एंड देन द रूल्स ऑफ ड्रॉइंग अ रे डायग्राम यूजिंग अ कॉनकेव मिरर एंड अ कॉन्वेक्स मिरर. Right, guys, now talking about few definitions and the terms associated with the ray diagrams and the mirrors. हम लोग है ना सिर्फ concave mirror का example लेके we'll study the definitions. Right? Convex में same ही होता है. Come on. So I'm talking about a concave mirror. Yes. Okay, this line which I'm drawing out here is called the principal axis. So this is called the principal axis. Fine. Okay, now in the principal axis, what can you say? It is an imaginary line. Principal axis is an imaginary line which passes through the pole or the center, the geometric center of the mirror. So that is called the principal axis. याद रखना. So it is an imaginary line. It's along the x-axis which passes or through which the center of the mirror passes. That's it. Second is, we call this as a pole. Pole is like a geometric center of the mirror. Geometric center means ऊपर और नीचे equal divisions हैं. So pole is a geometric center of the mirror, right? Fine. Which obviously which lies on the principal axis.
फिर नेक्स्ट पार्ट है एक फोकस है. ओके, फोकस मैं थोड़े टाइम में बाद में आता हूं. लेट्स टॉक अबाउट द सेंटर ऑफ कर्वेचर. अच्छा, जो भी डिस्टेंस ये होगा ना, इफ दिस इज एक्स डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस. फोकस पढ़ाना बाकी है, ठहरो. And the distance between the center of curvature and the focus is always the same, right? So these two distances are exactly going to be identical. Now listen to me. Center of curvature is a center of a sphere. समझो ना, एक जमाने में once upon a time ये एक स्फीयर हुआ करता था, जिसमें से ये एक टुकड़ा मैंने काट के इधर लगा दिया मेरे यूज करने के लिए. That means center of curvature is a center of a sphere of which the surface of a lens is a part of. रट्टा नहीं मारना है, रट्टा नहीं मारना है, नको. Listen, ये एक है ना, स्फीयर का एक टुकड़ा है, एक पार्ट है, एक हिस्सा है, एंड ये उसका सेंटर है. ये एक इमेजिनेशन है, कल्पना है. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ अ स्फीयर of which the surface of a lens is just a part of. छोटा सा हिस्सा है वो, right? and इसको मैं radius of curvature बोलता हूं. So radius of curvature is the radius of a sphere. Once upon a time it was a sphere. Yep. So it is a radius of a sphere of which the surface of a lens is a part of. So हम लोग ने डेफिनेशंस में एक तो प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ा, हम लोग ने सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ा, पोल पढ़ा, देन वी स्टडीड अबाउट द रेडियस ऑफ कर्वेचर. लवली. लेट्स टॉक अबाउट द फोकल लेंथ. ऑलराइट, फोकल लेंथ वेरी सिंपल. इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस. बस, कुछ खास नहीं है, समझो, देखो और जानो. इसको हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं. पोल एंड फोकस के बीच का जो गैप है, जो डिस्टेंस है, उसको फोकल लेंथ बोला जाता है, राइट? नाउ टेल मी, व्हाट कैन यू से और स्टेट अबाउट द रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ? सोच के बोलना. ये जो एफ है ना, ये एफ, isn't it same as x? So I can say f is equal to x in the diagram and r जो है it is equal to 2x. So r is equal to 2x. Substitute. Can I say x के जगह पे अगर मैं f डालूंगा, so isn't radius of curvature equal to twice the focal length? Radius of curvature is twice the focal length. This is the connection, a relation between r and f. And now I come to the focus का definition. Focus का definition है ना, अलग अलग है. किसके लिए? कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के लिए. बट ये जो 5 definitions थे which I have already done with regards to concave and convex mirror, they are the same. That was the reason why I drew just one diagram in order to explain all the definitions. But now things have changed. Check. I am talking about a concave to initiate with, guys. Check this. Let's say this is a concave mirror. Yep. This is a pole. This is your focus. And let's take center of curvature. The bulging surface is going to be opaque. The inward surface is going to be a reflecting surface. Done. मैं पहले डायग्राम बना रहा हूं, फिर देख देख के मैं एक्सप्लेन करूंगा वही डायग्राम को. रट्टा नहीं मारना है, बाय हार्ट नहीं करना है, नहीं. सो कम ऑन. फर्स्ट रे ऐसा जाएगा, फोकस से पास होगा. सेकेंड रे ऐसा जाएगा, फोकस से पास होगा. मतलब व्हाट इज हैपनिंग? कम ऑन, व्हाट इज हैपनिंग? I can say that when the rays are parallel to the principal axis, देखो मैं समझ के बोल रहा हूं, रट्टा नहीं मारना है. The rays are parallel to the principal axis. Isn't this the principal axis? After reflection through a concave mirror, after reflection होने के बाद, they converge at a point on the principal axis, and that point is called the principal focus of a concave lens. ठीक है ना? अगर मैं
कॉन्वेक्स की बात करता हूं. या दिस इज कॉन्वेक्स फॉर यू ऑल. ऑलराइट. Okay, if this is focus, center of curvature, you have one more focus and center of curvature out here. The rays of light are coming from infinity. ये रहा, दो रेज लेके चलते हैं. These are two incident rays of light. After reflection through the surface of a convex mirror, okay, after reflection from a surface of a convex mirror, they don't meet. No, it's a diverging mirror. They will diverge and bend away. But when traced backwards, they appear to meet. देखने जाए तो वो लोग डाइवर्ज हो जाते हैं, बट जब मैं उनको पीछे ट्रेस आउट करता हूं, right, they don't meet. They appear to meet at a point on the principal axis, and that point where they appear to meet is called the principal focus of a convex mirror. So this is a convex mirror for you all, right? So we have understood about the definitions, and now going on with the rules. Rules में ना मैं मेरे बच्चों को है ना बहुत सिंपल ट्रिक देता हूं. मैं उनको 10 बार रिपीट कराता हूं. मैं क्या बोलता हूं पता है? गाओ, मेरे साथ गाओ. पैरेलल फोकस, फोकस पैरेलल, पैरेलल फोकस, फोकस पैरेलल. रैप बनाओ, राइट? द रैप इज पैरेलल फोकस, फोकस पैरेलल. और अगर ये दोनों में से कुछ ना हो, हाँ कुछ ना हो, पहले बोला ना पैरेलल फोकस, फोकस पैरेलल. यू कीप ऑन सेइंग दैट. या मजा आएगा तुम लोग को. उसके बाद अगर कुछ ये ना हुआ, देन द सेंटर ऑफ कर्वेचर. मतलब अगर इससे आंसर ना आए तो तुम लोग को भगवान की शरण में जाने का. मतलब क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर को याद करने का. तो जब व्हेन दीज रूल्स are futile, you should reach the center of curvature. So guys, these are my 3 rules. कुछ नहीं समझा, कुछ भी नहीं समझा. पता है समझा किधर है मैंने? सुनो ना. Let's understand the first rule. What do you mean by parallel focus? I'm going to talk about concave lens right now. Check it. So concave lens में let's use these 3 rules and understand what exactly do they mean by this. So first one, the first rule, the diagram goes this way. Yeah, this is a concave mirror, and this is a pole, this is the focus, and this is the center of curvature. According to the first rule, it is parallel focus. Parallel focus मतलब ray of light आएगा parallel. पहले parallel आएगा, अब फिर strike होने के बाद focus से निकल जाएगा. That is the meaning of parallel focus. पहले आएगा parallel, फिर जाएगा focus से. Second rule is focus parallel. Ray of light जा रहा है focus से, फिर जा रहा है parallel. मतलब focus parallel. First was parallel to the principal passing through the focus. Second rule, focus से जा रहा है, reflection होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल जा रहा है. गेटिंग इट? एंड थर्ड रूल तो यार मैं मेरे डायग्राम में ही बताऊंगा. ये थोड़ा है ना तुम लोग के लिए ना थोड़ा क्लाइमैक्स पे छोड़ते हैं ना. हाँ, ये अभी तक मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है. आई वुड बी एबल टू एक्सप्लेन इट द बेस्ट while drawing and solving in a ray diagram, right? So third rule, let's keep it cryptic for now. The next concept is about a convex mirror. The diagram goes this way. Again students, my laws will never change. क्योंकि लॉ को तभी लॉ बोला जाता है ताकि वो फिक्स्ड रहे, whether it be concave mirror, convex mirror or anything. Okay. So I can say first parallel focus. पहला रे parallel. After striking the surface, it doesn't meet. Right. Can I say it appears to meet at the focus. And second, focus. This cannot go to the focus. इसका रे कुछ और होगा. It will be through the center of curvature again. कॉन्वेक्स के लिए एक ही रे डायग्राम, एक ही रूल बता रहा हूं. सो आई एम जस्ट टीचिंग यू वन रूल फॉर कॉन्वेक्स. इसमें आई हैव टॉट यू फर्स्ट रूल एंड सेकेंड रूल. इतना तो याद रखो,
रे डायग्राम्स में ट्रस्ट मी यूल एंजॉय। कॉन्केव के मेरे ख्याल से 7 रे डायग्राम्स है एंड कॉन्वेक्स के तुम लोग के सिलेबस में 2 रे डायग्राम्स है। सो इफ आई एड ऑन टोटल in all, eventually we're going to study about 9 ray diagrams, right? So just go through this concept. We're going to attack the ray diagram.